हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी पढ़ेगा इंडिया आगे बढ़ेगा इंडिया. टुडे we are here with another topic of geography, a very common topic which has been every time in the news, that there was a kind of lunar eclipse or the solar eclipse. So today let's take out a few minutes and try to understand the very finer nuances of what differentiates a solar eclipse from a lunar eclipse, right? So basically what is an eclipse? हम लोग को जो जितना पता है लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, इट्स लाइक ओके द सन मून एंड द अर्थ they comes in a straight line, right? This is a basic understanding. Now where the sun is, the moon is, the earth is, and how it forms a shadow, that will be the detailed study under the solar and the lunar eclipse. But the basic layman understanding is that only. But there's a technical word when the three bodies are aligned in a straight line, right? That word is known as SY, ZY, ZY, CZ. ठीक है, अगर हम देखें तो it says that when three celestial bodies are in a straight line, the three celestial bodies की जो ये होती है उसके phenomenon उसको SY, ZY and GY. ठीक है, इसमें क्या होगा, तीन celestial bodies जो हैं they will be in a straight line. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. Eclipse, let's see what's the definition of eclipse. If we talk about the definition of eclipse, it says that it is defined as an astronomical phenomenon. ठीक है, the word is astronomical phenomenon. What? Which occurs when one spatial objects come within the shadow of another spatial objects. ठीक है, like एक जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे के शैडो में आ जाता है. It says that it happens when three celestial bodies are in a straight line. This alignment of three celestial objects in a straight line is known as SY, ZY, ZY. Now, an eclipse takes place when one heavenly body, such as a moon or a planet, moves into the shadow, ठीक है, of another heavenly body. ठीक है, वो जब मून है, see we know the sun is constant, right? The sun is not revolving, the earth is revolving, right? ये हमारा सन है, सन के अराउंड पे अर्थ रिवॉल्व कर रही है, लाइक सपोज यहाँ पे, एंड इट इज टेकिंग 365 days, बट द मून इज ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड इट इज टेकिंग 24 hours, राइट? सॉरी, इट इज टेकिंग 27 days, राइट? तो मैनी टाइम्स when the earth is revolving around the sun, so the moon is also doing around the earth. So many times the moon might come, ये moon आ जाएगा sun और earth के बीच में. ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, sun ये हो गया, moon यहाँ हो गया और यहाँ earth हो गया. Yeah, the sun will be here, the earth will be here and the moon will be here, right? So when this all three will come in a straight line, that term is known as SY, ZY, GY. But that will cause an eclipse, right? Now the position of the moon will determine whether it is a solar eclipse or a lunar eclipse. Okay, I hope you have understood till now. आगे देखते हैं. तो first we will discuss about a solar eclipse, right? चलिए, before we go into the technical definitions and everything, let's try to understand it through a diagram. Here is a sun, right? ये सन है. तो सोलर इक्लिप्स में क्या होता है, ये अर्थ है, द अर्थ इज विल बी रोटेटिंग, सॉरी रिवॉल्विंग अराउंड द सन. नाउ आई टेक अनदर कलर. द मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, द मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. नाउ व्हेन द मून comes in front or between the sun or the earth, right? When the moon is coming between the sun and the earth, that happens between a solar eclipse. Means in a solar eclipse में क्या होगा, ये sun है, ये earth है, बीच में moon आ गया. ठीक है, अब moon बीच में आ गया तो it will cast a shadow on earth. Now the definite shape and size of the shadow will determine whether it's a complete lunar orbit or an solar eclipse or an
partial solar eclipse, right? If it is in complete shadow zone, उसको हम लोग complete solar eclipse कहते हैं, and which only a shadow or a half part of his shadow is found, it is known as partial. Now let's come to the definition. What is saying? Solar eclipse, as observed from the earth, a solar eclipse occurs when the moon passes in front of the sun. This occurs on a new moon phase. ठीक है? So whenever a question will be framed in one of those statements, it will happen this occurs on a new moon phase. Is it right or wrong? So you will say, yeah, it is right, it happens on a new moon phase. Depending on the distance of the moon from the earth during the event, different types of solar concealment can be observed. वही हम बात कर रहे थे, partial and full. So when we talk of partial, in partial what happens, only a portion of sunlight is blocked. Sun, moon and earth are not exactly lined up. See, let us try to understand in this diagram. Here is the moon. This rays, if you see, ये ऐसे है, हम लोग दो रेज बनाते हैं हमेशा, ठीक है. अब ये जो रीजन था, दिस रीजन, राइट, here the complete shadow is falling on the earth, right? When the complete shadow is falling, it will be total, and this zone where complete it is not, it is known as partial. Okay, so it's saying that only a portion of sunlight is blocked. Here the complete sunlight is blocked, here the complete sunlight is not blocked, therefore that is partial. I hope you are understanding partial. Now let's understand the another solar eclipse, that is total. We are not coming this, we are coming over here, total. अभी हमने बात करा टोटल क्या था, ये पोर्शन जहां पे वो पूरा हो रहा था. So this portion, sorry, this area, this is known as total solar eclipse. Sun is completely blocked by the moon. The moon is completely blocking the sun. So the sun, moon and earth will be in a straight direct line. The sun, moon and earth will be in a direct line in this region. इस रीजन पे हम जो बात करेंगे, यहाँ पे सन, मून और अर्थ जो है वो डायरेक्ट लाइन पे है. ठीक है. अब एक और आते हैं हम लोग एनुलर. व्हाट इज एनुलर सोलर इक्लिप्स? Annular solar eclipse is said that the sun can be seen around the edges like a bright ring. ठीक है. See, now if you look at this diagram, the moon is here. This position might be close to the earth. Now when this position of moon is far, suppose if moon is here, right, the farthest from the earth, तो उस केस में क्या होता है, इसको मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ. लाइक ये सन था, और जब हम अर्थ से देखेंगे तो हमें उसके सामने में ये हमें मून दिखता है. ठीक है, ये हमें मून दिखता है. तो ये जो सन था, सन का जो सिर्फ आउटर था एज, ठीक है, बिकॉज सन इज बर्निंग, तो वो एंड इट रेडिएट्स लाइट इन इट, तो उसकी जो एजेस हैं वो सिर्फ हमें एक ब्राइट दिखेंगे, और क्योंकि बीच में शैडो है तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा. सो व्हाट विल बी विजिबल विल बी जस्ट ए रिंग, राइट. इट विल बी जस्ट विजिबल एज एन ब्राइट रिंग. दैट इज नोन एज एनुलर सोलर स्किप. इन दिस पोजिशन मून इज फारदेस्ट फ्रॉम अर्थ. ठीक है, ये ध्यान देना है. सो दिस वर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोलर इक्लिप्स, राइट. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड. Another kind of eclipse which we talk is the lunar eclipse. What happens in a lunar eclipse? Let's quickly see in this. Lunar eclipse occur when the moon passes through the earth's shadow. ठीक है, हमने यहाँ पे क्या देखा था कि मून बीच में आ गया था सन और अर्थ का, और यही जब यहाँ पे आ गया, अब अर्थ का शैडो पड़ेगा, यहाँ पे आ गया. ठीक है, तो दिस फेज, this occurs in lunar eclipse. ठीक है. So lunar eclipse occurs when the moon passes through the earth's shadow. This happens only during a full moon. ठीक है, इसमें देखेंगे आपको. जी हाँ, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है. It's saying that a solar eclipse forms on a new moon phase, right? When a new moon phase will come, that is happens in a solar, but in a lunar, what is saying,
that happens only during a full moon, right? This happens only during a full moon, when the moon is on the far side of the earth from the sun. Depending on how the sun, the moon and the earth line up, lunar eclipse too can be categorized as partial and total. जैसे हमने पढ़ा था सोलर में, there is partial solar eclipse and there is total solar eclipse. Similarly the lunar eclipse की वो shadow zone क्या है, complete shadow zone होगा तो वो total solar eclipse हो जाएगा, और अगर थोड़ी टोटल नहीं है तो मतलब थोड़ी लाइट्स आ रही हैं तो वो पार्शियल होगा. उसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं हम लोग, ठीक है. वही 2 लाइन रे डायग्राम बनती है इसमें भी. दिस इज द सन, नाउ दिस इज द अर्थ, राइट, एंड दिस इज द मून, ठीक है. अब हमने यहाँ से ऐसे एक लाइन खींच दिया, एक लाइन ऐसे खींच दिया, एक ऐसे और एक ऐसे. सो ये जो जोन था, अगर इसमें अगर मून है तो दिस विल बी ए रीजन ऑफ लाइक कंप्लीट और टोटल लूनर इक्लिप्स. नाउ सपोज इफ दिस मून वाज एट दिस पोजीशन, ठीक है, सो इट विल बी नोन एज पार्शियल, बिकॉज यहाँ पे लाइट आ रही है थोड़ी, ठीक है. सो दिस इज फुल शैडो जोन and this is a partial shadow zone. So in a full shadow zone there will be a total lunar eclipse, and in partial shadow there will be a partial lunar eclipse. I hope कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है आप लोग को अंडरस्टैंड करने में, इजी चीज़ें हैं, ठीक है. I don't think there's anything more left in like eclipse to discuss. So these were the two basic kinds of eclipse which we see. We got a fair understanding as in a solar eclipse it is the moon which comes in between the sun and the earth, and in lunar eclipse it is the earth which comes between the sun and the moon. So the various position of the moon with respect to earth determine what kind of eclipse we are having. I hope you have an understanding of the chapter. For any queries, do download the app and raise your queries under the My Student segment. Thank you.